Good morning, students of class 3. Students, today I'll be continuing with lesson 3, True Friends of your Wordsworth English Reader book. Students, I had discussed question and answers, fill in the blanks, and some exercises of this lesson yesterday. But then the one exercise of grammar and writing section is still left, which I'll be continuing and completing it today. But students, before I continue with the grammatical exercise, I would like to revise the exercise discussed yesterday. So those of you who have got books, please turn to page number 27. Students, first of all, we'll be encircling the correct spellings, which we have already done yesterday. Let's revise it once again. The correct spelling of swimming is S-W-I-M-M-I-N-G. S-W-I-M-M-I-N-G, swimming. When you swim and when it's in continuous tense, it becomes swimming. Second is fortunate. Fortunate means your good luck, your luck. So the correct spelling of fortunate is F-O-R-T-U-N-A-T-E. F-O-R-T-U-N-A-T-E, fortunate. Third word is branches, the branches of a tree. And the spelling of branches is B-R-A-N-C-H-E-S. Then fourth word is writing. Spelling is W-R-I-T-I-N-G. W-R-I-T-I-N-G. Fifth word is 80, number 80. And the spelling is E-I-G-H-T-Y, 80. Sixth word is weather. Spelling of weather is W-E-A-T-H-E-R. We often say the weather is pleasant today. So the spelling of weather is W-E-A-T-H-E-R. Then seventh word is childhood. There's no such word as children. So the correct word is childhood, and the spelling is C-H-I-L-D-H-O-O-D. Eighth word is enemy. Enemy is a person whom you don't like, you don't want to see. Opposite of friend. We are very much fond of our friends, but we dislike our enemy. And the spelling of enemy is E-N-E-M-Y. Ninth word is different, and different has got double F. The spelling is D-I-F-F-E-R-E-N-T, different. Then 10th word is truly. T-R-U-L-Y, truly. Please memorize these spellings, students, and write these spellings in your notebook also. Now we'll move to the next exercise, countable and uncountable. Now students, countable nouns are those nouns which can be counted. वो बेटा जिनको हम गिन सकते हैं. Uncountable nouns are those which cannot be counted. Now a list of words is given, and we need to identify that which is countable and which is uncountable. So identify the countable and uncountable nouns from the box and complete the given table by writing them under the correct categories. So students, will tick all the countable nouns. The first word is sandwiches. Sandwiches you can count, so it is countable noun. And students, remember, all the countable nouns have got singular and plural form, while the uncountable nouns, they do not have any plural form. And we can use a or n before a countable noun, but that should be singular. But we cannot use a or n before uncountable nouns. So you need to keep these things in mind. Truth, you cannot count, so it is uncountable. So we will not put a tick on that. Water, again we cannot count. Give me 1 water, give me 2 water. We can't say like this. So it's again uncountable. Cities, yes, we can count. So it is uncountable noun. They are uncountable noun. Sugar, can we count sugar? No. Then it is uncountable noun. Girl, yes, of course we can count the girls. So it is uncountable noun. Wood, we cannot count.
Trees we can count, chairs we can count, things made out of wood can be counted, but wood as it is cannot be counted, so it is uncountable. Stories, of course, we can count, and we can also make the plural form of stories, stories. One story means story, and more than one will become stories. And as explained, the countable nouns have got singular and plural forms, so this is countable. Stones, yes, we can count, so countable noun. Books, yes, we can count, countable noun. Beauty, we cannot count beauty, so uncountable. Laughter, it is again uncountable noun. Tea, can you count tea? No. We can rather say, give me a cup of tea, but we cannot say, give me one tea, two tea, three tea. So, we rather say, give me a cup of tea. So, cup can be counted, but tea all alone cannot be counted. So, it is uncountable. Hen, yes, we can count hens. So, hen is countable. Sheep, yes, we can count sheep. But remember, children, the plural form of sheep is also sheep. Sheep does not change in its plural form also. Sheep is, if there's one sheep, you'll call it sheep. And if there are more than one sheep, if you see 5 sheep, then also you'll say sheep. So sheep doesn't, other word is not used for sheep. Sheep remains same for one sheep and whether 5 sheep. So the singular and plural form of sheep, the spelling will remain the same. It is countable. Then Jews cannot be counted, so it is uncountable. So these were the countable and uncountable nouns. Now students, articles. Our dad explained yesterday, there are two types of article. One is indefinite article and the other is definite. A and N are known as indefinite article, which you will be learning in the senior classes, while the is definite articles. Now you need to keep this in mind कि हमको पता है बेटा 5 vowels होते हैं A, E, I, O, U, और जितने भी words जो vowel से start होते हैं, apple, elephant, ant, egg, umbrella, इन सब के आगे हम n लगाते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है बेटा कि वो सब सिंगुलर हो. प्लूरल जो है उनके साथ ए एन नहीं लगता, ए और एन सिंगल चीज के संग लगता है, और जो वर्ड्स वाल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके हम आगे ए लगाते हैं. ये हमने क्लास 2 में भी वी हैव लर्न दिस इन क्लास 2 एंड विल बी लर्निंग दिस आल्सो. बट नाउ वी नीड टू नो व्हेन डू वी यूज द. बेटा हम द कहाँ यूज करते हैं? द हम बेटा डेफिनेट चीजों के संग यूज करते हैं. एक तो कोई अगर नाउन सेंटेंस में जब रिपीट होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय इन द गार्डन, दिस इज वन सेंटेंस. यहाँ बॉय के पहले हमने अ लगाया, लेकिन सेंटेंस में फिर सेकंड सेंटेंस में आया डैश बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, फिर से बॉय वर्ड यूज हुआ, तो हम उस बॉय के पहले द लगाएंगे. जब नाउन रिपीट होता है सेंटेंस में तो हम फर्स्ट टाइम उसमें ए या एन लगाएंगे, लेकिन जब सेंटेंस में नाउन रिपीट होता है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे बेटा? द. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द. नाउ द सेकेंड रूल सेज कि द किन किन चीजों के सामने लगता है. द, अब जैसे ए और एन हमको पता है कि सिंगुलर चीजों के साथ लगता है, कोई भी एक चीज. द जो है सिंगुलर के साथ भी लग सकता है और प्लूरल के साथ भी. द बॉयज भी हो सकता है और द बॉय भी हो सकता है. सिंगुलर के साथ भी लगा बेटा और प्लूरल के साथ भी लगा. लेकिन वी नीड टू रिमेंबर समथिंग मोर. द जितने भी रिवर्स के नाम हैं, गंगा, नर्मदा, कावेरी, तीस्ता, जितने भी रिवर्स के नाम हैं, सबके पहले वी विल पुट द. वी विल यूज द बिफोर ऑल द नेम्स ऑफ रिवर्स. जितने भी रिवर्स के नाम हैं उनके आगे क्या लगेगा बेटा? द. We write the before the names of rivers. Then जितने भी mountains and mountain ranges है उनके आगे भी हम पहले क्या लगाएंगे बेटा? the. We will use the before all the names of mountains and mountain ranges. Then all famous buildings, जितनी भी famous buildings जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जितनी भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं
उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे बेटा, द। ठीक है, द हवा महल, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, तो जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स के आगे वी विल यूज द। फिर बेटा वन थिंग मोर, जितनी भी होली बुक्स हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, जितनी भी होली बुक्स होती बेटा, हम उनके आगे भी क्या लगाते हैं, द। जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे बेटा, द। तो और यूनिक चीजें जैसे सन है, मून है, अर्थ है, ये सब यूनिक चीजें, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं, दे आर जस्ट वन ऑफ देयर काइंड्स, तो इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द। Then, before the name of all newspapers, the Hindustan, the Times of India, the Dainik Jagran, the Hindu, तो जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम है बेटा, उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, the. Now we will start the exercise. We'll revise it. We have already done it yesterday. I would like to eat an egg and a banana for breakfast. बेटा फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, एन एग एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट. सेकेंड, डैश मून इज हिडन बिहाइंड डैश क्लाउड्स. द मून. अब ना यू नीड टू रिमेंबर बेटा कि यहाँ पे द जो है वो सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, तो द टी ऑफ द विल बी कैपिटल. Whenever we start a sentence, we always start it with a capital letter. The moon is hidden behind the clouds. Clouds के पहले भी हम the लगाएंगे बेटा. तो but यहाँ का जो the का t होगा वो small होगा. Why? Because it is coming in between the sentence. And when we start a sentence, we always start with a capital letter. Third, dash apple a day keeps dash doctor away. An apple. Again, A of N will be capital because we are starting a sentence. An apple a day keeps the doctor away. Fourth, is someone at the door? Why the before door? Because हम किसी particular door की बात कर रहे हैं. So, is someone at the door. Now again, fifth one, the sun, because sun is unique, moon is unique, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे बेटा, the sun rises in the east. Before all directions we need to put the. But remember children, whenever you start a sentence, you always start with a capital letter and end with a full stop. Question number 6, please get me a pencil, a pen, an eraser and a ruler from the market. Over here children, you need to remember कि कोई भी सिंगुलर चीज है और जो वाल से स्टार्ट हो रही है उसके सामने हम एन लगाएंगे. बाकी जो सिंगुलर चीज है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है लाइक पेंसिल, पेन, रूलर, बॉल, तो उन सब के आगे हम क्या लगाएंगे, so you need to keep these small things in mind. Now students, we'll start with our punctuation exercise. Now what are punctuations? Punctuations, I hope everybody knows what punctuation is. What are punctuations? In the sentence, you as we have just done, कि whenever we start a sentence, we start with a capital letter. Whenever you write your name, आप जब भी अपना नाम लिखते हैं, आपके स्मॉल लेटर से लिखते हैं कैपिटल लेटर से, यू राइट विथ अ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर से आप क्यों लिखते हैं, बिकॉज योर नेम इज प्रॉपर नाउन. इट कैन बी अंकित, इट कैन बी सोम, इट कैन बी चेतन, इट कैन बी अलंकृता, it can be आकृति, it can be अमोदिता, it can be कृतार्थ, it can be समर. जितने भी नेम्स हैं ये सब प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से. आप पर्सन्स के नेम हो सकते हैं, सिटी के नेम, लाइक वी ऑल लिव इन वाराणसी, तो वाराणसी का वी क्या होगा, कैपिटल होगा. लखनऊ जेल विल बी कैपिटल. तो जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं वो हमेशा किससे लिखे जाते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से. देन ये तो कैपिटल लेटर से ना. हाँ, बट फुल स्टॉप. फुल स्टॉप whenever we end a sentence बेटा, हम जब भी सेंटेंस अपना फिनिश करते हैं,
आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप लगाना जरूरी। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने सेंटेंस कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट किया देन ऑल्सो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग एंड मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो दीज स्मॉल थिंग्स प्ले अ बिग रोल इन राइटिंग। तो कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट करना है, प्रॉपर नाउन है तो हमें कैपिटल लेटर यूज करना है, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप। नाउ कम्स द क्वेश्चन मार्क। और बेटा जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, जिसका हमको आंसर चाहिए होता है ना। सो व्हेनेवर जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं बेटा, उनके एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन लिख दिया एंड इफ यू फॉरगॉट टू पुट द क्वेश्चन मार्क योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्योंकि अभी आपको ग्रामर में एक्सरसाइज करनी होगी in which you'll have to frame questions, and if you forget to put a question mark your answer will be wrong, your sentence will be wrong. Now comes comma. बेटा comma हम कहाँ यूज करते हैं? Suppose आप मार्केट गए and you bought apple, oranges, mango, grapes. तो आपने 4 fruits खरीदे, apple, oranges, mango and grapes. Fine. अब when you will write I bought apple, comma, oranges, comma, mango and fruits. तो जब हम किसी भी नाउन को सेपरेट करते हैं तो हम उसके बीच में बेटा क्या लगाते हैं? कॉमा, वो सेग्रीगेट करता है। देन कम्स द एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको सबको एक्सक्लेमेशन मार्क पता है? आई विल टेल यू व्हाट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज। दिस साइन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी मार्क। दिस साइन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी मार्क। और बेटा जहां हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारा सेंटेंस में से व्हेन वी आर हैप्पी वी सेज वाओ वी वन द wow, you're looking so beautiful, hurrah, we won the match, alas the poor dog is dead। जहां पे हम अपनी फीलिंग शो करते हैं, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, सरप्राइज की, वहां पे हम क्या लगाते हैं बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो विच दिस इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ देन कम्स अपोस्ट्रोफी। अब बेटा आप कंफ्यूज मत होइएगा कॉमा एंड अपोस्ट्रोफी साइन में, बिकॉज कॉमा हम लाइन पे नीचे की साइड, बिलो ऑन द नीचे की साइड में लगाते हैं, एंड अपोस्ट्रोफी हम राइट हैंड साइड में टॉप की तरफ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट राइट वन वर्ड फॉर यू, I, then apostrophe sign and M. Up, can you see the difference between comma and apostrophe? Apostrophe हम राइट हैंड साइड में कोई भी अल्फाबेट के राइट हैंड कॉर्नर में साइड में लगाते हैं जब हम apostrophe, और कॉमा हम नीचे लगाते हैं वर्ड के। सो डोंट गेट कंफ्यूज। और अपोस्ट्रोफी का साइन हम कब लगाते हैं बेटा? व्हेन वी वांट टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे अभी मैम ने शॉर्ट फॉर्म लिखा था आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई अपोस्ट्रोफी एम। फॉर एग्जाम्पल आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आरएंट, AREN अपोस्ट्रोफी साइन टी। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डोंट, DON अपोस्ट्रोफी टी। These are the short forms. तो जब हम short forms लिखते हैं तो उसमें हम कौन सा साइन यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी का। एंड अपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। अपॉस्ट्रोफी हम क्या बताते हैं? पोजीशन। अभी हमने लेसन पढ़ा ट्रू फ्रेंड्स के बारे में, है ना। तो whose net was there in the lesson? किसका नेट था? whose net? The hunter's net। तो पोजीशन बता रहा है कि वो जो नेट था जिसमें हंटर ने टर्टल को ट्रैप किया था वो किसका था? हंटर्स नेट। तो हंटर में वी विल यूज अपॉस्ट्रोफी एस टू शो पोजीशन। बताता है कि ये नेट किसको बिलोंग करता है। पोजीशन मीन्स वो बताएगा कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, किसके पोजीशन में है। यू गेट द पॉइंट? सो अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं, और अपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं पोजीशंस बताने के लिए। द मदर ऑफ सुमन
told the girl to bring the bottle. अब इसका हम short form mother of Suman को हम बोल सकते हैं Suman's mother. Suman's mother told the girl to bring the bottle. The tail of the elephant is small. अब इसका हम possession क्या बोलेंगे? The elephant's tail is small. Elephant apostrophe s. तो show possession. ये possession बताते हैं. So I hope ये भी आपको clear है. Now we'll start with the exercise. अब इसमें हमें punctuate करना है. With the first one. Why aren't you eating the vegetables on your plate? Now here we need to make the W of Y capital because we are starting with we always start with a capital letter. We write a sentence always using a capital letter, whether it may be an interrogative sentence means आप क्वेश्चन लिख रहे हैं या सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा बेटा? कैपिटल. So why aren't we'll be using and sign up apostrophe after n. हम n और t के बीच में apostrophe लगाएंगे. Y's W would be capital. Over here n और t के बीच में हमारा apostrophe sign आना चाहिए. Why aren't you eating the vegetables on your plate? Now this is a question mark. So we'll put a question mark at the end. Now this is a interrogative question. Why aren't you eating the vegetables on your plate? Somebody is asking a question. Why aren't you eating the vegetables on your plate? So we have started the sentence with a capital letter. Then aren't is a contraction of are not. Are not का short form है बेटा aren't. So there is an apostrophe used in aren't after n. जो भी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, डोंट, डू नॉट, आरंट, आर नॉट, इजंट, इज नॉट, हमेशा बेटा अपॉस्ट्रोफी का साइन एन के बाद में लगता है. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. सो व्हाई आरंट यू ईटिंग द वेजिटेबल्स ऑन योर प्लेट? एट द एंड क्वेश्चन मार्क. So this was the first one. Now let's come to the second one. My parents got me a train set, a pencil box, a school bag, a toy car for my birthday. Abhi now first, as explained, M of my will become capital because we always start with a capital letter. My parents got me a train set. After set, put a comma. We need to separate it from the other noun. A pencil box. After box, put a comma. A school bag. Now end is there, so before end we do not put a comma. And at the end of the sentence put a full stop. My parents got me a train set, comma, a pencil box, comma, a school bag and a toy card for my birthday. At the end of the sentence, please put a full stop. So remember children, whenever we start a sentence, we always start with a कैपिटल लेटर. एंड जब हम नाउन को सेपरेट करते हैं तो हम किससे सेपरेट करते हैं बेटा? कॉमा से. लेकिन रिमेंबर बिफोर एंड वी नेवर पुट अ कॉमा. एंड इफ इट्स अ सिंपल सेंटेंस, टू एंड द सेंटेंस वी यूज अ फुल स्टॉप. नाउ द थर्ड वन. The boy's shoelace isn't tied. Now T of the will be capital. The boys. Now here. Boys. Whose shoelace? Boys. So we need to use apostrophe after Y and before S. The boy's shoelace isn't. Again isn't. It's a contraction. N के बाद में और T के पहले. The boy's shoelace isn't tied. After tied, put a full stop after tied. The boy's shoelace isn't tied. तो boys में apostrophe है क्योंकि possession बता रहा है बेटा. Whose shoelace? किसका shoelace है? Boy का. तो boys. It is showing the possession. Whose shoelace? Boys. And isn't is the short form of is not. तो यहाँ पे भी apostrophe use करते हैं. Apostrophe हम बेटा कहाँ use करते हैं? For short form. That means contraction. Don't, isn't, aren't.
These are all contractions जो short form में लिखे जाते हैं और हमेशा बेटा short form में n के बाद आता है apostrophe का sign. Just remember this. और boys अगर singular है तो s के पहले apostrophe आएगा और अगर boys बेटा plural होगा तो s के बाद में आएगा. You need to keep the small things in mind. And whenever we start with a sentence, we always start with a capital letter. The boy's shoelace isn't tied, and tied के बाद full stop. I know my full stop is not very neat, थोड़ा सा shabby हो गया because it is difficult to write. Fine. This is difficult to write on the mobile, so it is shabby. Now, the next sentence. Fourth, congratulations, you have won the competition. Now here, we need to make the C of congratulations capital because we always start with the capital letter. Now congratulate, आप किसी को congratulate कर रहे हो. So after congratulations, you need to put a comma. Congratulations, you have won the competition. After competition, put a full stop. Next, where is your house? Now it's a question. So W of where will become capital. Is your house? This is a question. So at the end, question mark. Where is your house? So at the end, question mark. Now let's move on to the sixth one. The Charminar is located in Hyderabad, Andhra Pradesh. Okay, you always start a sentence with a capital letter, so T will be capital. Now, Charminar is a famous building, monument of Hyderabad. It's a proper noun. So, C of Char will become capital, M of Minar will become capital. Because proper noun hai, jitne bhi proper nouns hai, we always write with capital letters. The Charminar is located in Hyderabad. Hyderabad is again a city. So Hyderabad it will become capital. Hyderabad, comma हम because separate कर रहे हैं. हैदराबाद एक city है, आंध्र प्रदेश एक state है. So Hyderabad, after Hyderabad we need to put a comma. Andhra Pradesh A will become capital. Pradesh P will become also capital. At the end, full stop. So the Charminar is located in Hyderabad, comma, Andhra Pradesh. So T is capital because we always start a sentence with capital letter. Charminar, C and M is capital because it's a proper noun, name of a monument. Hyderabad, again it's a proper noun, so we always use capital letters for proper noun. Andhra Pradesh, again proper noun, name of a state, so A and P are capital. Hope you remember these small things. Now 7. Wow, that's great news. Now here, wow, हमारी feelings है, isn't it? So vow's W would be capital because ये एक interjection है, तो उसके बाद हम exclamatory mark लगाएंगे wow के बाद. उसके बाद हम we will make exclamatory mark के बाद बेटा that का T भी capital हो जाएगा. That's and that's में again S के पहले apostrophe sign आएगा. Wow, that's great news. You will write that's like this. I'm writing is because there's less space over there. Wow. Then exclamatory mark. That's great news. At the end, full stop. Wow, that's great news. क्योंकि that is का contraction है. That's short form है. तो यहाँ हमने apostrophe का sign लगाया. Wow, interjection है, इसलिए उसके बाद exclamatory mark आया and at the end full stop. Wow, that's great news. Now last one is when will you complete the project? This is a question. So again W of when will be capital and at the end question mark. When will you complete the project? So students, I hope punctuation marks are clear to you, isn't it? Punctuation marks कौन-कौन से होते हैं बेटा? Let's revise once again. Capital letters हमेशा when we always use when we start a sentence or
we write any proper noun, we always use a capital letter. Full stop at the end of the sentence, comma, when we want to, when there are many nouns together in a sentence, we separate them by a comma. Then exclamatory mark is used after interjections. जो words हम जिससे हमारा surprise, happiness, feeling show, after all interjections we use exclamatory mark. Then wherever there's a question, end of interrogative sentence, we always use a question mark. Then sign of apostrophe to show contractions. Contractions mean short form. Uh, isn't, is not, it isn't is the short form of is not. Aren't is the short form of are not. Haven't short form of haven't, have not, sorry. तो जहां भी हम शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस यूज करेंगे वहां अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे. अपोस्ट्रोफी का साइन बेटा पोजेशंस बताने के लिए भी हम यूज करते हैं. टू शो द पोजेशन किस चीज को बिलोंग करती. द एलिफेंट्स लेग, द किंग्स क्राउन, द टीचर्स पर्स, द बॉयज बुक्स. बताने के लिए चीज किसको बिलोंग करती है. यहाँ पोजीशन बनाने के लिए भी हम बेटा क्या यूज करते हैं. Apostrophe. I hope punctuations are clear to you now. Now, students, the listening exercise will be done when the school reopens. This will be done in the class when we get the CD, and I'll dictate and you'll do as per I instruct you to do. Now, students, there's a story. We need to write a story. That's creative writing. Now, can you see the picture? What can you see in the picture? Can you see anything in the picture? A lion is resting. A lion is resting. Okay. What else can you see in the picture? Can you see a small mouse under his arms? Can you see a small mouse? And yes, there's a small little mouse. Can you see the mouse now? Yes. So, this is the story of the lion and the mouse. Now, complete the following story with the help of the given picture. This story is about the lion and the mouse. There was a lion in a forest. He was old. He did not move around. Once he felt very tired. He fell asleep under a tree. A mouse living in the hole of the tree trunk was playing around. He ran over the lion. The lion woke up. Now, what you have to write from here is his sleep was disturbed. His sleep was disturbed. He caught the mouse angrily. He caught the mouse angrily. The scared little mouse begged the lion to spare his life and let him go. The scared little mouse begged the lion to spare his life and let him go. The lion laughed at the mouse and set him free. The lion laughed at the mouse and set him free. Now, from here, the lion fell into a hunter's trap. He was caught in a strong net. The lion tried to free himself, but he could not. He cried for help, but no one came. Suddenly, a mouse. Now, please start writing. Start writing from here. Start writing from here. Appeared before him, full stop. Remembering the lion's kindness, the mouse went near him, full stop. The mouse cut the strong net with his sharp teeth and set the lion free. Full stop. That's all. Once again, I'll repeat the second blank. Appeared before him, full stop. Remembering the lion's kindness, the mouse went near him. The mouse cut the strong net with his sharp teeth and set the lion free. The lion thanked the mouse and said, "You may be a small mouse,
but you have the heart of a lion. So students, once again I'll read the story, complete story for you. There was a lion in a forest. He was old. He did not move around. Once he felt very tired. He fell asleep under a tree. A mouse living in the hole of the tree trunk was playing around. He ran over the lion. The lion woke up. Now the blank starts. His sleep was disturbed. He caught the mouse angrily. The scared little mouse begged the lion to spare his life and let him go. The lion laughed at the mouse and set him free. The lion fell into a hunter's trap. He was caught in a strong net. The lion tried to free himself, but he could not. He cried for help, but no one came. Suddenly, a mouse appeared before him. Remembering the lion's kindness, the mouse went near him. The mouse cut the strong net with his sharp teeth and set the lion free. The lion thanked the mouse and said, "You may be a small mouse, but you have the heart of a lion." So, students, this was the story. Please write the story in your notebooks.